Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Azmi, teacher UPS Bandi Zone Shamkot. स्टूडेंट्स हम 8th क्लास की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे कलर्स ऑफ रेनबो। तो ये कोस व कज़ा के बारे में कहानी है जिसे धनक भी कहते हैं। तो बच्चों, कलर्स ऑफ रेनबो इज़ ए डोगरी शॉर्ट स्टोरी. It is about the couple who engaged in small quarrel and arrange in arguments. Finally, things settled at a loveful and joyful notes. ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है जो एक जोड़े के मुतल्लिक़ है जो आपस में झगड़ते हैं और बास मबासा करते हैं और आखिर पर इस मसले को सुलझा लेते हैं। The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The cloud had cleared, and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature. Lost in thought, just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were spotting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. यानी बारिश अभी रुक गई थी। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। कभी कभार खिड़की की एविंग से पानी के कतरे गिर रहे थे। बादल साफ हो गए थे और सूरज भी निकल आया था। बारिश के फ़ौरन बाद जब सूरज चमकता है तो बहुत खुशगवार लगता है। मैं फितरत की खूबसूरतियों को देख रहा था। सूरज गुम हो गया था। सिर्फ खिड़की के बाहर मिर्च के कुछ पौधे थे। सूरज में गुम था। पानी के कतरे टपक रहे थे। पौधों पर से फिसल के नीचे गिर रहे थे। मेरी सारी तवज्जो बारिश की बूंदों पर मरकूज थी। A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly. While sitting on the cot, the kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze, and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun. It became cloudy, and sometimes the sun came out. बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने चारपाई पर बैठे हुए अपने इर्द गिर्द बेडशीट मजबूती से लपेट ली थी। बच्चे खेल रहे थे, बाहर जा रहे थे और अंदर आ रहे थे। वो बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन मैं इससे कमोबेश गाफिल था। मिर्च के पौधे हवा में नाच रहे थे और इनसे पानी के कतरे टपक रहे थे, गिर रहे थे। बादलों के छोटे पैच आसमान में आगे बढ़ रहे थे। कभी कभार उन्होंने सूरज का अहाता किया और कभी कभार बादल बन गए और कभी कभार बाहर आए। Papa ji, see the swing of Gudda Guddi. Muni was saying, clinging to me. Where is it? Daughter asked. Papa ji, देखो गुड्डा गुड्डी, मुनी मुझसे चिपटे हुए कह रही थी। कहाँ है बेटी? मैंने पूछा। There up in the sky, multicolored
replied Munni. وہاں آسمان میں کثیر رنگ نظر آ رہے ہیں، منی نے جواب دیا. Who told you? تمہیں کس نے بتایا؟ Is the swing of Gudda Guddi I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it of theirs? کیا گڈا گڈی کی جھول ہے؟ میں نے پوچھا. اس نے ناراضگی سے کہا، پھر یہ کس کا ہے اگر ان کا نہیں؟ Who told you? تمہیں کس نے بتایا؟ Grandma told us. دادی جی نے ہمیں بتایا. Is I see, then it must be so, I said, looking at the window in the sky. میں دیکھ رہا ہوں، پھر ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے آسمان میں قوس و قزح کو دیکھتے ہوئے کہا. پاپا جی I too want a swing. پاپا جی میں بھی جھولنا چاہتی ہوں. You can have this one. Try to put her off. آپ کو یہ مل سکتا ہے. میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی. منی کو. This doesn't help. Why should I take something that is not mine? یہ مدد نہیں کرتا. میں ایسی چیز کیوں لوں جو میری نہیں ہے؟ I began wondering how wise the little one was. Munni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. میں سوچ رہا ہوں کہ چھوٹا سا کتنا عقل مند تھا. منی اس کے بعد مختلف چیزوں کی باتیں کر رہی ہے، لیکن میں ان سب پر توجہ نہ دے سکی. میں اپنے خیالات میں گم تھا. میں اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا. میں اپنے خیالات میں گم تھا. تو بچوں آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. والسلام.